Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of Practical Geometry. This is second question of its exercise 10.5. So the question says that construct a right angle triangle whose hypotenuse is 6 cm long and one of the legs is 4 cm long. So हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे 4 सेंटीमीटर, इसे हम नेम दे देंगे ए बी। देन एंगल ए पर हम एक राइट एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड एंगल बी से पर कंपास को फिक्स करके एक कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करके विद द हेल्प ऑफ स्केल एक आर्क कट करेंगे एंड जहां पर इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट को हम नाम देंगे सी। देन सी को हम बी से ज्वाइन कर देंगे। So here triangle ABC is a required triangle, right angle triangle. Here BC is hypotenuse 6 centimeter long and one leg means base is 4 centimeter and angle A is 90 degree means right angle. Thank you.